आज हमारे पास आया सैमसंग का फोल्ड 2। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसकी फ्रंट वाली डिस्प्ले भी लाइन आ रही है और ये अंदर वाली डिस्प्ले भी इस पर भी फुल लाइन आ रही है। तो इसका हमें पूरा कॉम्बो चेंज करना है, अंदर का और बाहर का। और इसका हमारे पास जो कॉम्बो आया हुआ वो आया हुआ पूरा विथ फ्रेम, तो उसे भी हम चेंज करके दिखाएंगे आपको वीडियो में। और सैमसंग की ये तो पुरानी बीमारी है इसकी लाइन वाली, सैमसंग वन प्लस इनके अंदर लाइन की दिक्कत ज़्यादा आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तो साइड में रहती है, ये मंगाया इसका विद फ्रेम पूरा फोल्डर। ये डिस्प्ले इसकी फ्रंट की भी है और अंदर की भी है, बिल्कुल फ्रेश है। इसका चार्जिंग का पत्ता निकाल लेना, पुराने वाली 80 में से ये वो रह गया था। इसे कर दिया हमने साइड रेडी को, और ये अपनी नई वाली इसका फ्रेम लेते हैं, फिर इसे चार्जिंग के पत्ते को इसके अंदर लगाते हैं, फिर इसका इंडिकेटर भी लगाते हैं, फिर इसे पूरे सेट को करते हैं पैक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
कैमरे से पूरे सेट को पैक कर दिया है। ये देखिए इसकी डिस्प्ले तो परफेक्ट चल रही है बाहर वाली, और इसके अंदर की दिखाते हैं आपको। ये भी देखिए एकदम परफेक्ट हो चुकी है हमारी डिस्प्ले। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब